What are the 5 tips and techniques by which you can make an eye contact more confident, focused and interested? अगर आप एक सच्चे इंसान नहीं हो, if you are guilty, you cannot make an eye contact with anyone. So eye contact talks about everything about your personality. आप एक सच्चे इंसान हो, एक झूठे इंसान हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो या अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपकी आंखें सब बता देती है. ब्रेक गेजिंग का मतलब ये होता है कि आप एट अ टाइम एक इंसान को जब देख रहे हो, सो डोंट लुक एट दैट पर्सन फॉर मोर देन 5 to 10 seconds. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लुकिंग एट यू, बट समटाइम्स आई लुक एट माई हैंड्स ऑल्सो, सो आई ब्रेक गेजिंग. Sometimes when I talk to you, I look elsewhere and again I look at you. Because at a time when you look at someone for more than 5 to 10 seconds, the person you are talking to, that person feels discomfort. Smooth transition during public speaking. When you are talking to a large audience, you have to look at everyone. Because अगर आप सामने वाले को नहीं देख रहे हो, there will be a disconnect between you and your public. So as a whole, you have to look at everyone. You cannot just look at one person in the public. Suppose मेरी मम्मी बैठी हुई है, my mother is sitting in the public, so I'm looking at my mom only, and everyone will see disconnected. I cannot just focus on one person. Even I cannot focus on every person. I see every person for maximum 1 second so that everyone feels that I'm talking to that particular person. Make an acknowledgement. जब आप किसी को सुन रहे हो तो उसे देख रहे हो, देखने के साथ साथ आप अपने सर को नॉडिंग भी कर रहे हो. So when you are nodding, you are acknowledging someone that yes, I'm listening to you. मैं तुमको सुन रहा हूँ. Not only that, you can make some sub vocal sounds like okay, These are the sub-vocal sound we can use with my eye contact and nodding to convey that yes, I acknowledge you. Be smart, not fool. For example, a male is looking towards a female or a female is looking towards a male. Sometimes people feel discomfort. जी हाँ, some people they look down and they show that I'm a big fool, I'm not confident. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. Look at the tip of their nose. उनके नाक के टिप में फोकस करना. They will feel as if you are looking to their eyes. ऐसा होना तो नहीं चाहिए, but in case आपको लग रहा है कि you are not feeling confident, look at the nose tip. Be smart, not fool. Break gazing with respect. It has been seen some people they break gazing and they look at their watch. Sometimes they look at their phone. That shows you disrespect that person. You disrespect the time of that person. जब भी आप अपने गेज को ब्रेक करें, कोई ऐसी चीज के ऊपर फोकस ना करें जिससे सामने वाले को लगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इवन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम ऑल्सो ब्रेक गेजिंग, बट आई ब्रेक माई गेजिंग एंड आई एम सीइंग टुवर्ड्स माई बॉडी लैंग्वेज. मैं अपने बॉडी लैंग्वेज को देख रहा हूं और सामने वाले को पता है कि ये बॉडी लैंग्वेज मैं आपके लिए ही कर रहा हूं. आर यू गेटिंग दैट? Look at elsewhere and again come back. This is very important. दोस्तों, जब आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हो, there are many things जो आपके इंप्रेशन को डाउन कर सकती है. एक मजेदार सा वीडियो मैंने बनाया है, अभी जाइए. इसमें हमने कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स दी हैं जिससे आप किसी को भी, स्पेशली कोई अनजान को भी इम्प्रेस कर सकते हो.